Good morning student, Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 8 maths and our chapter is comparing quantities. Student, in this chapter we learn what is percentage, what is ratio, how to find increase percentage, how to find decrease percentage. In our daily routine, we so many times we see to find we have to find the percentage. Okay, so I will give you the formula for increasing percentage and decreasing percentage, how to find profit percentage, what is profit, what is loss, and so many things we learn in this chapter. Okay, so what is profit? If selling price is greater than cost price, then we can say that it's occur profit. Okay, and if cost price is greater than selling price, then loss is occur. Okay, how to find profit percentage? So formula for finding profit percentage is profit percent is equal to profit into 100 upon CP, means cost price. Okay, loss percentage, similarly loss into 100 upon cost price. How to find CP when profit percentage is given or SP is given? So your formula is CP is equal to SP into 100 upon 100 plus profit percent. Okay, and when loss percentage and SP is given, then you can find the CP with the help of this formula. CP means cost price is equal to SP into 100 upon 100 minus loss percentage. Okay, understand? Now if you want to find SP when profit percentage and cost price is given, then the formula is CP into 100 plus profit percent upon 100. And when loss percentage and CP is given, then you can find SP is equal to CP into 100 minus loss percentage upon 100. Okay, so these are main formula you have to remember. Okay, understand? Now we can talk about overhead charges. Total cost price जो होती है, whatever the overhead charges are there, so overhead charges is always added into cost price. So total cost price is equal to cost price plus overhead expenses. Okay, now and if profit percentage is given and you have to find profit, then what is the formula? Profit is equal to profit percentage into CP upon 100. Okay, and loss, similarly loss is equal to loss percentage into CP upon 100. Okay, so this way you easily find the profit and loss percentage or profit and loss. Okay, and we can talk about sales tax or value added tax. And now this tax is called GST. Okay, tax are of two types: direct tax such as income tax, wealth tax, professional tax, etc., and indirect tax that is sales tax and value added tax, VAT, service tax. Direct tax are collected by the central government and sales tax or value added tax is collected by the state government. This is charged on the bill amount. Shopkeeper collect it from the customer and deposit to the government. Okay, understand? So these main point we learn in this chapter and we completed question number 5th. हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था. नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6 carefully. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the market price of all the item. What would a customer have to pay for a pair of jeans
marketed at 1450 and 2 shirt marketed at rupees 850. Okay, so if you go to market and want to buy jeans, then what price you have to give to the shopkeeper. Okay, so let's calculate. So first of all we have to, for a pair of jeans, okay, अब जीन्स जो पेयर, वन पेयर मीन्स दो जीन्स का प्राइस कितना दे रहा है वो 1450, मार्केट प्राइस क्या है उसका 1450, इट्स गिवन एंड डिस्काउंट इज 10%. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंट. ओके, सो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट हम कैसे फाइंड करेंगे, 10% ऑफ 1450 रुपीज़. सी ओके, 10/100 इंटू 1450. Okay, so your answer is 145. So सेलिंग प्राइस में 145 रुपीज़ आप माइनस कर देंगे. ओके, सो व्हाट इज़ योर न्यू प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1450 माइनस 145, so that is 1305. Okay, so this is the selling price. Okay, so total selling price, what is the total selling price of okay, this is the selling price of jeans. Okay, now what about shirt? So cost price, marketed price of shirt is 850 rupees. Okay, उसने दो टी शर्ट खरीदी है, so 1700. Okay, the question is the price of one t-shirt is 850 and he brought pair of two shirt खरीदा है उसने. Okay, so what is price he paid, 1700. Okay, so 10% of 1700. So he paid 170 rupees. ओके, सो डिस्काउंट कितना मिला उसे, एक जीन्स पर मिला है 145 रुपीज़ का, टी शर्ट पर मिला है 170 का. सो टोटल मार्केटेड प्राइस, टोटल प्राइस वो कितना देगा, कितना पे करेगा. सो व्हाट इज़ योर प्राइस, 1305 प्लस 1530, सो ही पेड 2835. thus the customer would have to pay 2835 rupees. Okay, understand. So this is your question number 6. Now let's read question number 7. A milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of rupees 5% and on other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. Find CP of cost price of each. Okay, so फर्स्ट बफेलो को उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है, 5%. सो 5% ऑफ 20,000 इज सी, प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन. व्हाट इज गिवन, पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर गिवन डेट. व्हाट इज गिवन फॉर फर्स्ट बफेलो. फर्स्ट बफेलो के लिए SP है, सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है ₹20,000. ओके, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 5%. एंड यू वांट टू फाइंड CP, सो यू हैव द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग CP इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP. If selling price is given, then you have to find this formula. Okay, so it's given profit percentage is 5% and SP is also given. So what you can do, CP is equal to 100/100 plus 5 because profit percentage is given 5 into SP is 20,000. Okay, so it's 100/105
into 20,000. Okay, so you can find it rupees 100 upon 105. So when you can cut it down, 5 2s are 10, 5 2s are 10 and 1. Okay, so it's become 4 lakh. Okay, upon 21. Okay, so overall SP you have divided and you have to find 4 lakh upon 21. ओके, नाउ सेकेंड बफेलो के लिए उसको कितने परसेंट लॉस हो रहा है? 10%. सो 20,000 उसका क्या है? SP है. ओके, लॉस परसेंटेज क्या दिया हुआ है? 10%. सो यू हैव टू फाइंड CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट into SP. So in this case 100 upon 100 minus 10 into 20,000. Okay, so here 100 upon 90 into 20,000. 0 से 0 कट जाएगा. Okay, so your answer is 2 lakh upon 9. Okay, so फर्स्ट बफेलो के लिए हमने निकाला है. हमारे पास में ओवरऑल SP क्या होगा? ओवरऑल हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारे पास में 2 into 20,000. ओके, मीन्स उसके पास में टोटल कितना है? 40,000 रुपीज़. टोटल उसके पास में 40,000 रुपीज़ है. ओके, नाउ ओवरऑल CP क्या हो जाएगा हमारे पास में? जो हमने CP निकालना है, CP हमारे पास में 4 lakh upon 21 प्लस 2 lakh upon 9. Okay, so when you LCM that, so your LCM is 63. 3 into 4 lakh plus 7 into 2 lakh. ओके, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए. नाउ इट्स बिकम 12 lakh प्लस 14 lakh. जस्ट मिनट. 12 lakh plus 14 lakh upon 63. Okay, so when you added it, your answer is 26 lakh upon 63, and when you divide it, your answer will be 41269.84. Okay, so यहाँ देखिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 41269.84. सो इट्स योर CP एंड SP कितना था? 40,000. ओके, सो यू कैन राइट CP इज ग्रेटर देन SP. सो हिज लॉस इज 41269.84 minus 40,000. So your answer is 1269.84. His loss is, overall loss is 1269.84. Okay, understand? So this way you complete the question number 7. Okay, now what about question number 8? Read it. The price of a TV is 13,000 and sell tax charge on it at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy it. Okay, डिस्काउंट उसको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? सेल्स टैक्स. ओके, सेल टैक्स 12% है, तो 13,000 का 12% पहले आप निकाल लेंगे. ओके, सो यू हैव टू फाइंड 13,000, 12% ऑफ 13,000. सो 12 अपॉन 100 इंटू 13,000. ओके, 2 0 से 2 0 कट जाएगा. सो योर आंसर इज 12 इंटू 130, दैट इज़ 1560. इतना उसे क्या मिल रहा है? सेल टैक्स लग रहा है. ओके, एंड प्राइस ऑफ TV इज़ 13,000 प्लस 1560. सो टोटल प्राइस ऑफ TV इज़ 1465
60. Okay, understand? So this way you complete question number 8. Now what about question number 9? Question number 9 is Arun brought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he paid is rupees 1600, find the market price. Now here we have to find मार्केट प्राइस. सो अगर हमें मार्केट प्राइस फाइंड करना है, मार्केट प्राइस हमें पता नहीं है. ओके, सो लेट्स फाइंड द मार्केट प्राइस. सो फर्स्ट वी कैन डू लेट द मार्केट प्राइस विल बी 100. ओके, एंड डिस्काउंट परसेंटेज कितना है उसका? डिस्काउंट परसेंटेज 20%. सो 20% ऑफ 100 is equal to 20/100 into 100. मीन्स हर 100 रुपीज़ पर उसे 20 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है. ओके, सो सेल प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस SP हो जाएगी 100 - 20, that is 80. ओके, इफ़ सेल प्राइस इज ₹18, then market price is 100. Okay, so you can write SP is 80, then MP is equal to 100. Okay, so if SP is equal to 16,000, then MP is equal to 100/80 into 16,000. Okay, 1600. So your answer is 100/80 into 1600. So your answer is 2000. ओके, सो उसका मार्केट प्राइस कितना था? 2000 था, जो उसे 20% डिस्काउंट पर 1600 में मिला. ओके, अंडरस्टैंड? सो ही पे 1600 रुपीज़. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. See, I purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. Okay, मैंने 5,800 में क्या किया है? हेयर ड्रायर ख़रीदा है जिस पे मैंने 8% का क्या लगाया है? वेट लगाया है. तो मुझे अपना ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है. ओके, वेट इज़ ऑलरेडी गिवन. ओके, so let the price will be 100. Again, let the price, market price will be, original price will be 100. Okay, if the original price will be 100, so 8% डिस्काउंट हमारे पास में क्या है? ओरिजिनल प्राइस प्लस 8% वेट. ओके, ओरिजिनल प्राइस प्लस 8% वेट. सो अगर मैंने ओरिजिनल प्राइस बोली है 100 रुपीज़. ओके, सो ओरिजिनल प्राइस प्लस वेट कितना लगा मुझे? 100 प्लस 8% ऑफ 100 रुपीज़. ओके, सो दिस बिकम 100 प्लस 8/100 into 100. सो यू कैन राइट इट. 100 से 100 कट होगा, इट इज़ 108 रुपीज़. कितना आया? ₹108. सो बिल अमाउंट इज़ ₹108. अगर आप बात कर रहे हैं 100 रुपीज़, 108 अगर बिल अमाउंट है, कब? जब आपका ओरिजिनल प्राइस क्या है? व्हेन ओरिजिनल प्राइस इज़ 100. ओके, सो इफ बिल अमाउंट is 5,400, so you can write it 100/108 into 5,400. ओके, ठीक है, आप इसे कट कर सकते हैं. 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8. अगेन okay, and you can multiply them.
So your answer become 5000 समथिंग एंड 27 को भी कट कर सकते हैं. करिए आप लोग कट. बोलिए 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 और 0. ओके. 9 2 ज़ा 18, 0. Okay. So this way you have complete the question. Okay. Understand? So this is your question number 10. Now अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें? So student, this way you completed the question 11 also. Okay. Now complete these questions and in your notebook. Okay. And remember all the formulas. Okay. Have a good day.